गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन आज क्या है, वो किंग ऑफ बैड टाइम्स कहा जाता है। आज कितनी एयरलाइंस बंद हो गई अध्यक्ष महोदय? लगभग 20 एयरलाइन जो है वो बंद हो गई। जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट लाइट, एयर डेकॉन, एयर एशिया इंडिया, उसके साथ साथ मैं बोलना चाहती हूँ एयर पेगासस, इतने सारी मेरे पास नाम है, मैं उसकी पूरी जो लिस्ट है, एयर कोस्टा, एयर मंत्रा और अलग अलग कंपनियां, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लगभग 20 कंपनियां बंद हो चुकी है और कुछ जो है वो मर्ज हो चुकी है। और आज ऐसी हालत हो गई है एयरलाइंस की कि आज मेजॉरिटी जो एयरलाइंस में चल रही है वो एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और आकाशा, इसी पे पूरा संपूर्ण हमारा एयरलाइन जो है सम्मानीय अध्यक्ष महोदया पूरी तरह से जो है वो अवलंबन है। और इसकी वजह से जो मोनोपोली हुई है उसका भुगतना ग्राहकों को हो रहा है, यात्रियों को हो रहा है, जिसका असर हमने पिछले 6-7 दिन पहले देखा। जिस तरह से एयरपोर्ट पे लोग परेशान थे, लोगों को खाना नहीं था, पानी मिल नहीं रहा था, अपने घर पे सुरक्षित जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस बात की कोई सुरक्षा नहीं थी, उनसे कोई संवाद नहीं कर रहा था, ना एयरपोर्ट अथॉरिटी कर रही थी, ना एविएशन मिनिस्ट्री कर रही थी, ना वहां के जो एयरलाइंस के लोग थे वो कर रहे थे। और इससे बड़ी समस्या जो मोनोपोली की वजह से अध्यक्ष महोदय लोगों को सहनी पड़ी, लोग अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग अस्पताल में जाना चाहते थे, कुछ लोगों का एडमिशन था वो पहुंच नहीं पाए, और सबसे बड़ी समस्या लोगों को करनी पड़ी क्योंकि ये मोनोपोली जो चल रही है उसकी वजह से करना हो गई है। एक नई चीज मैं बोलना चाहती हूँ, अगर 5 मिनट आप एयरपोर्ट पे देर से पहुंचे तो आपको पता है कि एयरलाइंस आपको कहती है कि आप नहीं जा सकते, अभी आपका सामान नहीं, आप नहीं चेक इन कर सकते। लेकिन अगर एयरलाइंस खुद अगर लेट हो जाए तो कोई उनके ऊपर चार्जेस नहीं होता। अभी हमारे यहाँ पे तो मुंबई एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, एयरपोर्ट में तो हमारे यहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है कि पानी की बोतल लो, समोसा लो, चाय लो, वड़ा पाव लो, इतना महंगा हो गया है। मेरा एक कहना है, कभी तो मंत्री महोदय से, पहले वो जीवीके का एयरपोर्ट था तभी उन्होंने एयरपोर्ट विजिट किया होगा, जब से वो अडानी एयरपोर्ट हो गया है मुंबई का, वो कभी जाके देख के आए क्या? उन्हें मुझे पूछना है। छोटी छोटी जगह पे, छोटे छोटे कॉर्नर पे भी शॉप दिए हैं। आज लोगों को मुंबई एयरपोर्ट पे चलने के लिए जगह नहीं है। और ये शॉप क्यों दिए गए हैं? क्योंकि इसका शॉप का जो रेंट है अध्यक्ष महोदय, ये सबसे बड़ी इसकी कॉज है। जहाँ पे रेंट अगर जहाँ वहाँ है तो 22,000 से 40,000 स्क्वायर मीटर का अगर कोई शॉप है तो उसके लिए जो रेवेन्यू शेयर है जो अदानी लेते हैं वो 28% से 38% का लेते हैं। ये मुझे यहाँ पे जानबूझ के कहना है। पहले कैसे होता था, जब जीवीके के पास एयरपोर्ट था तो जीवीके जो है वो सिर्फ रेंट लेते थे, ये रेंट भी लेते हैं, रेंट के बाद रेवेन्यू शेयर भी लेते हैं। और इतना ही नहीं, अगर उनके साथ आप ज्वाइंट वेंचर करोगे कोई ऑपरेट करने के लिए एक शॉप के लिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अदानी कंपनी के साथ अगर ज्वाइंट जो है वो वेंचर करना चाहते हो शॉप के लिए तो 60% जो है वो अदानी शेयर ले गए और 40% जो वहाँ के टेनेंट है वो शेयर लेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की जो है, अरे एक वड़ा पाव लोगे तो 35 रुपीज का एक वड़ा पाव अगर आप लेते हो और अगर आपने बिल नहीं दिया तो 30,000 की पेनल्टी भरनी है। क्यों? क्योंकि उसमें से 50 से 60 तक का शेयर अदानी को जाता है। वो डिसीजन लेते हैं रेवेन्यू का, वो डिसीजन लेते हैं रेंट का, तो एयरपोर्ट किसका है? मेरा ये सवाल आपके माध्यम से मैं और भी रखना चाहती हूँ। पार्किंग के रेट क्या है अध्यक्ष महोदय? 6 दिन लोग तकलीफ में थे, आपने लोगों से पार्किंग के लिए, आपने बाकी एयरलाइन ने तो प्राइस बढ़ा दी, लेकिन जो गाड़ियां लगी थी लोगों को पता नहीं था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 8 मिनट से लेके 1 घंटे में अगर आप प्राइवेट व्हीकल से जाती है तो 160 रुपया लेते हैं, 1 घंटे से आप 2 घंटे में बैठते हैं तो 370 रुपया लेते हैं, 3 घंटे से लेके 4 घंटे में बैठेंगे आप गाड़ी तो आपका 400 रुपया लेंगे। मेरा ये सवाल है कि किसके लिए ले रहे हैं आप? 1000 रुपया तक ले रहे हैं 6 घंटे बाद, किसके लिए ले रहे हैं? अदानी के लिए ले रहे हैं। तो हमारा ये सवाल है कि ये गरीब लोगों के लिए व्यवस्थापन रखा गया है या अमीरों के लिए या किसी एक दोस्त को मदद करने के लिए मुंबई एयरपोर्ट काम कर रहा है? एक उड़ान नहीं हो रही है, आपका बराबर व्यवस्थापन नहीं है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से मेरे मतदार संघ के कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ सम्मान्य मंत्री महोदय से। उनको पता है कि पहले भी मैंने ये सवाल बहुत बार उनको जाके मिल के कहे, जहां मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ वहां पे मुंबई एयरपोर्ट का जो है वो रनवे फनल जोन है। मैं बताना चाहती हूँ कि वहां पे हमारे यहाँ पे इमारतें हैं, कितने लाख लोग रहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय? 18 लाख लोग वहां पे रहते हैं। और उस फनल जोन में अगर बात करूं तो 25 नगर पालिका के वार्ड है। आज वहां पे 70 साल से बिल्डिंगें हैं, आज वो कमजोर हो गई है, वहां बुजुर्ग लोग रहते हैं, अगर आप लिफ्ट नहीं है चलना पड़ता है। आज क्या है वहां पे ऊंचाई क्षेत्र की प्रतिबंधन की वजह से और सुरक्षा के कारण से आज अगर आप देखोगे क्योंकि हवाई अड्डे के निकट जोन में है, फनल जोन है, वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते।
आज लोग वहां पे अपनी जान हथेली पे लेके रह रहे हैं, ताकि तोड़ो, ये करो, वो करो, सबका लोगों को तकलीफ देने का काम चल रहा है। मैं बार बार मंत्री महोदय से मिली, मैंने उनको कहा कि आप धारावी डेवलपमेंट के लिए जो है वो अदानी जी को इतना सब कुछ दे रहे हैं, उनको आपने जमीनें दे दी, सॉल्ट प्लांट लैंड दे दी, आपने मालवनी दे दी, आपने कुरला दे दी, आपने देवनार का डंपिंग ग्राउंड दे दिया, उनके लिए एफएसआर पॉलिसी बनाई, उनके लिए टीडीआर पॉलिसी बनाई। कम से कम गरीब लोगों के लिए कुछ तो कीजिए, जो लोग वहां 70 साल से रह रहे हैं। राज्य सरकार के साथ बैठिए, कुछ पॉलिसी तय कीजिए। दुर्भाग्यवश आज तक उनकी कोई पॉलिसी तय नहीं हुई, लोग अपनी जान लेके वहां पे बैठ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि इनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और लोगों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठे और लोगों के लिए पॉलिसी बनाई। ये मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है। So madam, we have to understand what goes into these airfares. I have talked about what some of the measures that we have taken, and also airfares is not a single entity. There are different charges that go into the airfare, and one of the most important one is the aircraft fuel. ATF goes up to 40%, 40 to 45% of the ticket price that you pay is because of the ATF. And the way ATF is there in the country, the state taxes the ATF. And there are multiple states who have brought it below 5%. We are very thankful to them. There are 26 states and union territories which have brought it down because they understand that even if you lose a small revenue in this taxation for the ATF, the kind of economic growth that it creates, the kind of growth aviation network creates for other industries is very, very important. And it is with that idea that it was being done. But there are some states which still have it at a very high percentage. And it is multiple times, our predecessor, Sindhya ji, is also here. He has written and spoken on this many times and written to chief ministers. And I have also taken that responsibility. I have written to chief ministers whenever I get the opportunity to meet them. I've spoken to them on this very specific issue to please bring down the ATF. Because if you bring it down, then definitely that also helps the passenger and the cost that it takes. And we have done it with Bihar also. Bihar used to have 29%, but in June 25, they have responded and they have brought it below 4%. And there is one state, Tamil Nadu also, Manikamji is here. So I will take this opportunity through this discussion also to encourage the state government to bring it down as much as possible, not 4%, but bring it down to 1% so that this benefit of the taxation also is being extended to the passenger at the end. And now this is the ATF. And when it comes to the DGCA measures, DGCA is also a very important regulator for us. It also looks after the safety. It also looked after the airlines and their operations. Now there is a tariff sheet which is being done by the airlines to see how are we going to charge. The tariff sheet mentions the minimum fare for a certain route, maximum fare for a certain route, and they have this bucket system where through buckets, they see how many seats are going to be allocated at a certain price. Not many would be knowing about this, but whenever you go to the website and you purchase a ticket, there is a clear tariff sheet that is mentioned there. But here the airlines also used to be doing their own chalaki. What they used to do, tariff sheet, because according to the law, they have to do it prominently somewhere, they have to display the tariff sheet. But we were also doing our own monitoring. We were checking where is the tariff sheet. But we used to go to the web page, and it used to take ages to look at it, where the tariff sheet it is right at the bottom, and even the letters with which it was written was only, you can see it only if you use a binoculars. It was at that situation. Then we said this is not the purpose of through which the law has been kept. Then we have updated them. They have instructed them that whenever they open, the tariff sheet should be seen right in the front in big letters so that every passenger can see it. We have brought that change. We have monitored that change. Now the tariff sheet is thoroughly displayed. But not only tariff sheet. Now earlier there was the rule that the tariff sheet, there was a small clause which gave an advantage to the airlines that every day they can change the tariff sheet. ऐसा होगा तो कैसे होगा? आज का tariff sheet आज का बन रहा है, आज का ticket हमने ले लिया, कल का tariff sheet कल का बन रहा है, तो again it's not serving the purpose. Then we changed the clause. Then we changed the rule that was giving that clause, that measure, and we said you won't change it every day. You won't change it every 24 hours. You will only change it every month, so that once the passenger sees at the head of the month, first week of the month, they have to give us the tariff sheet saying in that sector, in this month, how much are you going to charge, how many bucket charges you have. So everything the passenger should know on what charges it will be there. So we have changed it to 1 month. That is also a facility that the passenger will have. I would encourage
more passengers to look into this tariff sheet, to look at how the pricing is done, what is the minimum bucket, what is the maximum bucket. And this, we have done it last year itself, and there we have observing some changes because it improves the monitoring mechanism that we have on these airlines and their tariff sheets. And also on top of this, there is a tariff monitoring unit that we have created in DGCA. And the purpose of this specifically is to look into what the pricing is and how the airfares are fixed. Are they following the tariff sheet or not? Are there abnormal situations that are being created? So specifically just for tariffs, we have created a tariff monitoring unit, and it has been strengthened time and again through various measures. And earlier, when it started with around 50 routes. But now we have expanded to 78 routes. We are also taking international sectors also right now to understand where and how these tariff fares are being changed and how they are being done. And the tariff monitoring unit, which is going to be a very important unit for us to monitor these tariffs, we are bringing in more IT tools. We are bringing in more technology so that the power at the TMU increases and they can analyze the fares in a very tech-based manner using the IT tools also to analyze. So that is one thing that we have done, and we are also improving the capacity with which TMU works, not only in the routes that are being covered, and also in the number of people that you are doing it. So this is one. And then the most important thing in civil aviation sector in the last 10 years, this is a success story that not only me, who's part of this government, can talk about. Everyone on both sides, all across this house, they can all speak about it, that the Udan scheme was one of the most successful scheme, not only for the country, but for people across the world that we can showcase to. Udan scheme has made democratized air travel in the country. The way we have brought inclusiveness in civil aviation is because of the Udan scheme. The number of unserved and underserved airports in the country, there was a big number, and there was a challenge for us because there were these airlines who were looking at commercial interests. Naturally, the airlines would look at viable routes to function, and that is the most metro routes or the tier 2 to metro routes. But we have been creating airports across the country, especially in the Northeast, in our union territories, where they might be not viable to function, but still they need air connectivity. People were aspiring to have air connectivity in the country. So that was when our Honorable Prime Minister came up with this flagship scheme of Udan, Ude Desh Ka Aam Nagrik, and it has done wonders to civil aviation sector in this country. Whatever we experience, we have gone through different places now where people would have not ever thought that they would have an airport at that location. Because of the Udan scheme, we were able to start an airport there. Because of Udan scheme, we were able to start operations there. Today, almost 1,57 lakh people have availed the benefit of Udan. More than 3,26,000 routes have taken over in Udan. More than 693 routes, specific routes which were not there before, because of Udan scheme we have started. But there are certain limitations in Udan. The Udan scheme also is not like just to cater for the viability or just to start new connections. Udan scheme is supposed to act like a spark. Wherever there is a route which is not functional, we wanted to start the route, bring in the viability, bring in people, attach them to aviation, attach them to air travel, and let the private sector take its place. It is with this idea that the Udan was brought in, and it was envisioned for 10 years. But I can tell you right now, madam, in the last budget, Honorable Finance Minister Nirmala Sitharamanji, understanding the importance of this specific Udan scheme, because like I told, it is only for 10 years. So we were on the verge of completion of the Udan scheme, but she has made the provision that Udan is going to be expanded for 10 more years. This is a great thing for our civil aviation as we are trying to grow more and more in the next few years. Not only expansion for the next 10 years, but she has specifically mentioned that 120 new destinations are going to be covered. That is the strength that civil aviation has in this country. 120 new destinations. How many we have today? 164 airports. 164 is a vast network. But look at the capacity of the country. We are not stopping here. If we want to achieve Viksit Bharat, we have to connect each and every location as much as possible with civil aviation. In the next 10 years, we are going to do 120 destinations, and Udan is going to